Sir, heart attacks आम्ही जेमती जाणिले आगुरु it is more of retirement disease बोली आम्ही कुहे तो sir एबे but we are seeing that in early 30s as well. So sir, after that when it is detected heart attack 30s pore and when the doctor suggests advices for angiogram, see acceptance का लोगों को भीतर sir केमती way to go for a angiogram say stage at that age of life. आम गोटे जिनस जाना दरकार अच्छी जे आम देश पर्टिकुलरली इंडियन सबकंटिनेंट रे बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप दैट वी हैव हार्ट अटैक्स टेंड टू हैपन एट अ रिलेटिवली यंगर एज एज कंपेयर टू आवर वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स माने वेस्टर्नर्स रे जदि एई डिजीजटा 50 60 70 वर्ष देखा होछि आम देश रे पर्टिकुलर इंडियन सबकंटिनेंट 30-40 रे देखा जाउची इवन आम देखिए 20 वर्षिया जो मैंने इंडिविजुअल्स अच्छे तांको देहरे भी हार्ट अटैक देखा जाए ना एटा स्वाभाविक कथा जे एते कम बयस रे हार्ट अटैक केमती होउची जनरली एटा एक्सेप्ट करंतिनी जो रिलेटिव्स माने पेशेंट को अकम्पनी करंती बट वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग इन फैक्ट एट दिस रिलेटिवली यंगर एज because of the genetic makeup that we share as being born in this part of the world, and second because of the increasingly unhealthy lifestyles that we all adopt including use of tobacco products and then lack of exercise and unhealthy diet. तो देखो हार्ट अटैक गोटे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इवन आपण बंची गले भी तापर बहुत प्रकार कॉम्प्लिकेशन ए रोग जो आपण फेस करि परिबे तेणुक जदि आप डॉक्टर कहते जे हार्ट अटैक है इवन दो यू आर रिलेटिवली यंग इन योर 20s and 30s यार ट्रीटमेंट यथाशीघ्र आमको आरंभ करिया दरकार एंड वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज डूइंग एन एंजियोग्राफी टू सी वेदर ब्लॉकेजेस आर देयर इन द आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट दैट इज द कॉर्नरी आर्टरीज जदि ब्लॉकेज अच्छी तार तुरंत चिकित्सा करिया दरकार. सर तापरे आउ गोटे डाउट जनरली लोकंकर थाए जे वंस मोर एंजियोग्राम हिला तो आई बी फोर्स्ड बाय द डॉक्टर दैट आई विल हैव टू गो फॉर एंजियोप्लास्टी तो हाउ ट्रू इज दैट सर. नाउ देयर आर सम सिचुएशंस लाइक जदि आपण गोटे मैसिव हार्ट अटैक है देयर द इंटेंशन ऑफ डूइंग एन एंजियोग्राम इज जनरली टू ओपन द ब्लॉकेज दैट हैज कॉज्ड द हार्ट अटैक. तो सही क्षेत्र में ईसीजी इको एवं पेशेंट रो सिम्पटम्स बेले बेले किसी रक्त परीक्षा देखी जना थाए जे हाँ पेशेंट रो हार्ट अटैक है ब्लॉकेज बाहर ताकू ट्रीटमेंट करिया दरकार अछि सेतबेले आमे गोटे इंटेंशन नै कि आगो जे एंजियोग्राफी कले जो ब्लॉकेज जो हार्ट स्ट्रोक हेइतो हार्ट अटैक हेइछि ताकू आमे ट्रीटमेंट कर देबा काई ना गोटे जीवन प्रति विपद रोग एटा तो as soon जेते शीघ्र आमे ब्लॉकेज को खोली परिया सेते पेशेंट रो जीवन प्रति जो रिस्क अछि ताको आमे कमेई परिया. तो बट इन अदर सिचुएशंस जनरली आमे माने पेशेंट रिलेटिव्स को भी डाकी एक्सप्लेन करू जे अमक जिंस बाहर छै एंजियोग्राफी रे एमती यार ट्रीटमेंट ऑप्शंस अछि. सम टाइम्स ब्लॉकेजेस गुडा को यथा शीघ्र खोले पेशेंट प्रति एटा भलो ता रोग पे भलो एवं ता लाइफ ऊपर जो रिस्क अछि ता कमे होबो एवं कॉम्प्लिकेशन रिस्क कमे होबो. सम टाइम्स यू गेट इनफ टाइम टू डिसाइड एंड कम बैक एंड गेट इट डन. नाउ it generally depends upon your choice what you want for your patient, but the notion that is prevalent in the scientific community among cardiologists is that जदि आपनकर इंटेंशन नहीं ब्लॉकेज को खोले आपे आइदर बाय एंजियोप्लास्टी बा बाईपास सर्जरी जदि ब्लॉकेज बाहरला तो न बाहरले तो अति भलो कथा आपण मेडिसिन खाइबे जदि ब्लॉकेज बाहरला जदि आपण कोनोसी इंटेंशन नहीं फर्दर ट्रीटमेंट को करिया को प्लीज डू नॉट गो फॉर एन इन्वेजिव एंजियोग्राफी because it will hardly change your treatment plan. ठीक अछि. There are non-invasive ways of knowing blockage अछि नहीं CT coronary angiogram अछि कि आउ अन्य उपाय अछि बट जदि आपण चाहू नांती ब्लॉकेज खोले for whatever reason individuals have their beliefs and all these things so there is no need of just doing an angiograph to know whether there is blockage or not because this procedure also carries some risk although which is extremely minuscule nowadays with the increased technology and the skills evolved heichi jemti ajika दुनिया रे but still हमें suggest करिवु जे यदि आपण
further treatment କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, don't go ahead and do an angiography. But angiography କଲେ କିଛି situations ଅଛି ଯୋଉଥିରେ to save the lives of patients ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ पेशेंट एक्टर्स माने सेलिब्रिटीज माने हठात किना सडन डेथ हैगला हॉस्पिटल भी पहुंची पाइलेनी हॉस्पिटल पहुंचले सेठी डिक्लेयर हैला तो सडन डेथ हैगला एवं इट इज साइंटिफिकली प्रूवन जे सबटो एडवांस्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज रे लाइक द यूएस इवन इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रे 25% टू 30% लोक जो हार्ट अटैक होची से माने हॉस्पिटल पहुंची आगरो ही डेथ हो जाए ताकर So, a rogo is a life-threatening condition. So, we should act quickly. So, your doctor is the best judge to tell you how you should go about your treatment. But it is up to you what you want for yourself and your patient. So it's all about putting your trust on your Yes. patient And I think almost all of us do an ethical job. Right. So, you should not mistrust your doctor. Sir, another thing is once angioplasty is done, people tend to think that they are completely cured. So, and after that, once post angioplastic care, what are the mistakes that they do that they come back to the risk zone again? Now, angioplasty is done to open blocked arteries. That is, it will be undertaken when the blockages cause certain problems to the patient. Now, minor blockages will not cause any significant problems to the patients. Now, doing an angioplasty is not like taking out your gallbladder or your appendix. जोठी कि आपण gallbladder बाहर कर देले appendix बाहर कर देले रोग सरला आ बस आउ मासे परे आ डॉक्टर बाबू देखिया दरकार नहीं किछि करिया दरकार नहीं. तो इट इज अनलाइक दैट एंड आउ तो आपण ब्लॉकेज होला हार्ट रक्तनली काटी बाहर कर परियन कि हार्ट को बाहर कर परियन. तो angioplasty will only is a part of the treatment for your disease process. ठीक अछि. आपन प्रॉब्लम जहाँ जब आपन डाक्टर पाखु जाइछन सेटा से सॉल्व कर दो किंतु फ्यूचर रे प्रॉब्लम आउ थरे हबार चांस अछि केना हार्ट तो अछि हार्ट रो रक्त नली भी अछि देह भीतर आगो को जेंते प्रॉब्लम आउ थरे न हो ता पे आपन को किछि जिंस फॉलो करिया पड़ियो रेगुलर मेडिकेशंस नवा पड़ियो गोटे हेल्दी डाइट खाया पड़ियो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिया पड़ियो ऑफ कोर्स एज पर द एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन. So it is not like that जदि मो एंजियोप्लास्टी हे गला बा बाईपास सर्जरी हे गला एतिक रे काम सरला आउ ना औषध खाइबी ना आउ किछि मानिबी एउडा किछि करिया दरकार सेमिति नो. एवं इन एडिशन if you have got high blood sugar, high blood pressure and if you have high cholesterol level, these need to be treated. And if you are smoking or consuming tobacco in any form, you have to absolutely abstain from using tobacco products. So, sir, that means like once angioplasty is done, or if you are under any treatment, you have to take more care, better. You have to take precautions for that. Follow medications. Regularly visit your doctor as per his advice. And you should always aim to maintain a healthy lifestyle. Now, this healthy lifestyle and taking a healthy diet applies to everyone, whether you have got an angioplasty or not. Because maintaining a healthy lifestyle is the best way of not getting this disease. So sir, initially when the first time kotha hale 30 age group ki lesser than that we are seeing heart attacks. So seita ko prevent kariba ko ki any precautions or any lifestyle modifications that needs to be done. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଜେନେରାଲି ପିଲାବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁ ବଟ୍ ଆଜିକା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ୱେର୍ you are too much into academics ki kon preparation बहुत अच्छी people also sacrifice their sports activities physical activities eta generally कमी आउची जोटा को it is not a good thing that is happening in our part of the world. हमें regularly physical activity रे engage करिया कथा पाठ पढ़ा जगह रे अछि but at least we can spend 30 minutes to 60 minutes per day every day among all age groups to engage in physical activities. Take a healthy diet once in a while in a young age. Of course, fast food, junk food, this is all fine, but generally we should adopt a healthy lifestyle. And consuming tobacco in all forms has to be stopped. Then जब भी आमे कहा को young age रे आमे कहा को sugar, high blood sugar अच्छी, high blood pressure अच्छी कि high cholesterol अच्छी ता treatment करिया दरकार अच्छी.
ଆଉ ଯଦି ଆମ parents ମାନଙ୍କୁ କି brothers and sisters ମାନଙ୍କୁ young age ରେ heart attack ହେଇଛି, we need to be extra careful because then we are at increased risk if our first degree relatives have got heart attacks at a younger age, that is less than 55 in males and less than 45 in females. So, sir, stress and sleep, are they these two things also major contributors to like heart issues? Having Stress of course has got some contribution in people getting heart problems, but you see ajika dinre you cannot live without stress. It is an integral part of your life, so you need to devise solutions or ways to get rid of the stress. And lack of sleep, of course, it's contributes to the overall stress factor of the individual. So having a good sleep is extremely important to have a good overall health.